Greetings from Drishti Judiciary. हम आपके साथ कुछ समय से चर्चा कर रहे हैं जो नए कानून हमारे संसद ने पारित करे हैं उन कानूनों के बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता, रिप्लेसिंग द एविडेंस एक्ट, CRPC एंड IPC रिस्पेक्टिवली। आज हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है आपके साथ, क्योंकि हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपके साथ काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो आज की हमारी चर्चा है वो एक बहुत बहुत क्रूशियल पॉइंट पे होने वाली है। दैट इज सेक्शन 530 BNSS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530, एंड दिस फॉल्स इन चैप्टर नंबर 39, miscellaneous chapter है, and it falls, and it's probably the second last section, if I recall correctly. Section 531 of BNSS is the last section in chapter number 39, which ends the BNSS, that is repeal and savings. 530 is a miscellaneous section, if I can recall correctly. Yes. और ये एक इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसने हमारी पूरी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को कुछ हद तक मॉडिफाई कर दिया। देखिए, लॉ डेवलप होता है हमारी सोसाइटी के साथ साथ, सोसाइटी की नीड्स के साथ साथ। आई ऑलवेज सजेस्ट my students that it's important that you always understand the provision, the reason behind the provision, what is the legislative intent, what is the jurisprudential aspect behind the provision. That is of utmost importance. That is of utmost importance. और जब आप इन सारे facets के साथ अपना आंसर प्रेजेंट करते हैं, it creates a different impact. You score better marks, of course. लॉ डेवलप होता है हमारी सोसाइटी के साथ, और हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है वो भी कुछ हद तक सोसाइटल ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी सोचने का तरीका, हमारी मोरालिटी, जो सोशल कॉन्शियसनेस है, वो डिपेंडेंट है टाइम के साथ चेंज होने पर। फॉर एग्जाम्पल, जोसेफ शाइन की जजमेंट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अडल्टरी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, बट अर्लियर इट वाज एन ऑफेंस अंडर द IPC 1860. जोसेफ शाइन डीक्रिमिनलाइज्ड अडल्टरी because it was not gender neutral. It violated certain aspects of the Constitution, albeit Article 14 of the Constitution primarily. तो हमारी सोसाइटल कॉन्शियसनेस चेंज हुई। Section 377 of the IPC 1860, of course, was also decriminalized. That is, sexual relations between persons of the same sex. It was decriminalized. Earlier, it was an offense. Under Section 377 of the IPC, it was an offense, but it was decriminalized by the Honorable Supreme Court. Navtej Johar case. Societal consciousness changed. Similarly, with the development of technology, we have a lot of dimensions to cater to. भारतीय साक्ष्य अधिनियम अगर आप देखेंगे, that is the new evidence act, आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में डिजिटल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में, जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन की इलस्ट्रेशन है, वहां पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई में देखेंगे, अगर आप एविडेंस की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 1 डी फॉर डॉक्यूमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई फॉर एविडेंस। वेरी सिंपल टू रिमेंबर। आप देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जाके तो आपको बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स मिलेंगे। जब आप देखेंगे आपको मिलेगा प्राइमरी एविडेंस इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड टू बी इक्वेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस।
एक्सप्लेनेशन 4, 5, 6, 7 प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन परिभाषा देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जाकर, वहां पे 4 एक्सप्लेनेशंस ऐड करी गई है। एक्सप्लेनेशन 4, 5, 6 एंड 7 बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को। आप अगर सेक्शन 1 उठा के देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तो वहां पर आपको कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? ताकि अगर कोई भारत में बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू एविडेंस किसी बाहर के व्यक्ति का लेना चाहे, या कोई बाहर की इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डायरेक्टली एडमिसिबल करना चाहे अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो टेरिटोरियल एक्सटेंट की लिमिट से वह व्यक्ति बाउंड ना हो, हमारी कोर्ट्स लिमिट ना हो जाए बिकॉज ऑफ द इनैक्टमेंट। इसीलिए टेरिटोरियल एक्सटेंट ही नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से एनालाइज कीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन जो है वो सेक्शन 530 मिलेगा आपको बीएनएसएस का। अब ये बीएनएसएस जो हमारी बेसिकली न्यू सीआरपीसी है, वहां पे सेक्शन 530 हमें किस एस्पेक्ट के बारे में बता रहा है? देखिए, ये एक परमिसिव प्रोविजन, मतलब एक अलाउइंग प्रोविजन है जो स्कोप को बढ़ा रहा है। किस चीज के स्कोप को बढ़ा रहा है? कुछ प्रोसीडिंग्स मेंशन्ड हैं जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू करी जा सकती। प्लीज पे अटेंशन pay attention to what is being discussed here. Every trial, inquiry और proceeding, ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं ट्रायल, इंक्वायरी या प्रोसीडिंग की अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ट्रायल भी आ गया, इंक्वायरी भी आ गया, प्रोसीडिंग भी आ गई, इंक्लूडिंग। अब आप देखिए, जो शब्द वहां पे लिखा हुआ है वो है इंक्लूडिंग। सबसे पहले आपको सेक्शन 530 की लिस्ट में मिलेगा समन्स एंड वारंट, समन्स प्लस वारंट, जिसकी हम बात कर रहे हैं इशुएंस की, यानी कि समन्स या वारंट हो, आप उनकी इशुएंस इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, साथ साथ उनकी सर्विस, साथ साथ उनका एग्जीक्यूशन। आप इलेक्ट्रॉनिकली समन्स हो या वारंट हो, उनका इशुएंस, डिलीवरी या सर्विस और एग्जीक्यूशन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो, ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको सेक्शन 530 में मिल जाएगी। इंक्वायरी, आपको पता है इंक्वायरी जो कि पहले सेक्शन 2G सीआरपीसी में डिफाइंड था, इंक्वायरी इज डन बाय द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट। इंक्वायरी अगर आपको करनी है, आप वो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ट्रायल, अब चाहे वो वारंट केसेस का ट्रायल हो, वो समन्स केसेस का ट्रायल हो, वो सेशंस ट्रायल, समरी ट्रायल, and in fact plea bargaining also. In fact, plea bargaining also, all types of trials and plea bargaining also
can be done by audio, video, electronic means, electronic mode, electronic communication. Imagine recording of evidence, examination of complainant, or in fact witnesses also. Examination of complainant or witnesses also can be done by electronic mode, by electronic communication, और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. ट्रायल्स बिफोर अ हाई कोर्ट, अब इसका क्या स्कोप है और क्या मतलब है ये तो विद टाइम हमें पता चलेगा. ट्रायल्स बिफोर अ हाई कोर्ट and all appellate and such other proceedings. All appellate such other proceedings, मतलब रेफरेंस, रिविजन सब यहां पे आ जाएगा. Imagine what is being said when you talk about summons or warrant. Their issuance, service or execution can be done by electronic mode. When you talk about holding of inquiry, that can be done by electronic mode. All types of trial, including plea bargaining, can be done by electronic mode. Recording of evidence in inquiries and trials can be done by electronic mode. Examination of complainant and witnesses can be done by electronic mode. Trial before a high court can be done by electronic mode. All appellate and such other proceedings can be done by electronic mode. That means section 530 is talking about all these proceedings can be done by electronic mode, electronic communication and audio video electronic means. Section 530 is a completely new provision. You will not find any corresponding provision which is similar to section 530 in the old CRPC 1973. It's a permissive provision, very, very important, and you should know about it. You can get a factual question wherein the person is, let us say, in a very remote area and cannot come due to the pandemic. How will you conduct the bail proceedings? Can you examine a witness who is right now in a tribal area where there is electronic communication available, but he cannot come to the court in time? You might get a factual scenario. And if in a judgment writing answer, you are writing your judgment, or let us say you are giving your decision for that matter, you can definitely include this aspect. You should include this aspect and remember it. As a magistrate, you should remember it. Through electronic communication, audio, video, electronic means, by an electronic mode, you can deliver summons, you can deliver a warrant, you can even issue it electronically, you can get it executed electronically. You want to conduct an inquiry as a magistrate, you can do that by electronic mode. If you want to conduct a trial, do it. You want to record evidence in the trial, do it by electronic mode. You are wanting to examine the complainant under section 200 of older CRPC, of course, in complaint proceedings, do it. Trial before a high court, do it. All appellate and such other proceedings, even reference and revision, do you want to do it by electronic means? You can do it. There is no need. There is no need to focus upon in-court trials. This is a permissive provision. Of course, there should not be any miscarriage of justice. There should not be any abuse of the process of the court. Rights of the accused as well as the victim have to be balanced.
they have to be preserved. Then you can continue with the trial even in an electronic mode through electronic communication by audio, video, electronic means. Such an important provision. You know, the purpose of us bringing to you these small pocket-sized discussions is that in a very short time, you can at least get the highlights explained. Of course, there is a lot to grasp and memorize in the new laws, but at least you can get the highlights of these provisions in a detailed manner, yet in a very short period of time. We analyze the provision and bring it to you so that it's easier for you to retain and understand at the same time. I hope you have enjoyed the session. We have discussed a very monumental provision. Please have a good reading of it from the BEAR Act, the act that has been passed, and we'll be meeting you very soon with other such fruitful and productive discussions. Till the time, please take care. Any constructive comments, suggestions from your side are very much welcome. Thank you so much.